Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now get at this question and what is given in here. A uniform rope of linear mass density lambda. So this is not a massless rope and it passes over a smooth pulley of negligible dimension. At one end B of the rope, there is a small particle having mass 150 of the rope. Actually, there is one error here क्योंकि आंसर अगर आप चेक करोगे ना and if you solve it with this B having mass equal to 150 of the rope mass, then you won't be reaching to the answer. Actually, it has to be one fifth for that purpose. ठीक है? So this is 1/5 of the rope. Initially, the system is held at rest. Obviously, you need to keep it at rest. Naturally, if you leave it will come down. I mean, B side will come down. क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर पुली है और पुली के ऊपर इफ दिस साइड सपोज कर लो 5 kg है एंड दिस साइड इफ इट इज 2 kg देन इफ यू लीव इट 5 kg विल कम डाउन क्योंकि ये हेवी है ये 2 kg को अब खींच लेगा डन है so here also if you see L by 4 length will be lighter than that of L length plus B particle so if you leave it naturally this length will come down further and A will go up so naturally B has tendency to come down A has tendency to go up okay. Now this is this, the external agent begins to pull the end A downward. Now I mean there is external agent doing work or applying force and then only A will be able to come down, right? So A को वो नीचे की तरफ pull कर रहा है, it means the person is applying the force. Okay. Find the minimum work that the agent must perform so that a small particle will definitely reach the pulley. Now, in order to let this B particle reach the pulley, how long should this external agent apply force at end B? कब तक अप्लाई करना चाहिए तब तक अप्लाई करना चाहिए जब तक बी का नेचुरली ऊपर जाने का टेंडेंसी ना हो डन है सो इनिशियली इट हैज टेंडेंसी टू गो डाउन एंड हाउ लॉन्ग इट विल हैव टेंडेंसी टू गो डाउन until this left hand part has higher mass than that of right hand part and at the instant when both have same masses at that point I mean वहां पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है उसके जस्ट थोड़े से डिस्प्लेसमेंट अप के बाद बी विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड नेचुरली ठीक है सो हमें वर्क ऑलमोस्ट तब तक करना है जब तक दोनों साइड के मासेस इक्वल नहीं हो जाते क्लियर है अब आप देख लो मास कितना है टोटल मास पहले आप देख लो सो टोटल मास क्या होगा दैट इज योर L by 4 lambda plus L lambda this is the total length of the string L by 4 plus L so this is 5L by 4 lambda प्लस मास ऑफ दिस पार्टिकल बी सो पार्टिकल बी के पास कितना मास है 1/5 ऑफ एल बाई एल बाई आई मीन 1/5 ऑफ द टोटल लेंथ डन है सो 1/5 ऑफ टोटल लेंथ and what is the total length is L by 4 plus L that is your 5L by 4 so 1 by 5 into 5L by 4 into lambda right so this will become how much L by 4 lambda so this is L by 4 lambda so total mass of the system is how much this is your I mean 5L by 4 plus L by 4 so 6L by 4 and that will become how much 3 by 2L lambda so this is the total mass. Now, the case when half mass is this side and half mass is this side, what will be the half mass this side? I mean, देखो अगर आप राइट हैंड पार्ट देखो तो राइट हैंड पार्ट में जो भी मास होगा विल बी बिकॉज ऑफ अ स्ट्रिंग लेंथ एंड इफ राइट हैंड पार्ट हैज अ मास इक्वल टू I mean half of this that is 3L by 4 lambda for that thing to happen this side should have length equal to 3L by 4 डन है सो इधर की तरफ लेंथ हो जाएगा 3L by 4 lambda in that situation और देखो फिर how much mass will be left this side obviously 3L by 4 lambda but how much will be the length of rope left so देखो 3L by 4 लेंथ इधर आया है टोटल लेंथ इज 5L by 4 so minus 3L by 4 आप करोगे this is giving you how much 2L by 4 that is L by 2 so L by 2 length is this side left and then particle B is here अभी भी आप मास को ऐड कर लो इस साइड मास ऐड करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो L by 2 lambda plus L by 4 lambda mass of B, right? So total mass will give you how much? It is still 3L by 4 lambda. So both side has equal mass. डन है अब देखो इक्वल मास है यहाँ तक हमें वर्क करना है इसके बाद थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट अप होता है बी का
afterwards it will start going up naturally. So almost we can say up to this point we need to do work. तो चलो वर्क करके देखते हैं कितना वर्क हुआ है यहाँ तक. सो कैसे निकाल सकते हैं हम इनिशियल, आई मीन यहाँ पे pulley is smooth, right? Friction is not involved. And also the agent is doing work in such a way that it should be mentioned in the question, but it is not. Again, you can assume it here that while external agent is pulling the end A, the person is not giving any acceleration to what? Okay, anyway, minimum work कहा गया है. So it is given in the question. Minimum work का मतलब क्या है? आप इस तरह से force लगाओगे कि you are just able to take B upward without giving it any acceleration. डन है. सो मिनिमम वर्क के लिए मिनिमम फोर्स लगाओगे और मिनिमम फोर्स का मतलब यू विल टेक ए डाउन एंड बी अप विदाउट गिविंग द सिस्टम एनी एक्सेलरेशन. ओके, सो एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई सीन नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल सकते हैं, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज दैट विल बी द चेंज इन एनर्जी, राइट? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. सो चलो लिखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या होगा? सो लेट अस टेक दिस एज h इक्वल टू 0. सपोज कर लो ये हाइट 0 है. डन है. और अगर ये हाइट 0 है, चलो यहाँ करते हैं, अगर तुम्हारा ये वाला हाइट 0 है, इन दिस केस आई मीन बी इज, आई मीन इसको मैंने 0 लिया एंड टेक दिस डायरेक्शन एज अपवर्ड एंड टेक दिस डायरेक्शन एज downward which is negative. Okay, so initially L by 4 length of rope will have its center of mass at L by 8 distance. ठीक है, L length of rope will have center of mass at L by 2 distance and this is a point mass. Its center of mass is at this point only. डन है. अब चलो पोटेंशियल एनर्जी आप बी का लिखो पहले. बी का मास कितना है? सो पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग mgh. सो मास इज हाउ मच? L by 4, sorry, L by 4 lambda G into how much length below? Minus L. So minus sign. Okay. Potential energy of leftward rope will be how much? Again mass लिख लो. Negative sign मैं पहले दे रही हूँ क्योंकि down है. I mean reference line से down है तो potential energy negative ही होने वाला है क्योंकि height will become minus L by 2. So mass को आप लिखो पहले L by 2 lambda into G into H, that is, sorry, mass कितना होगा? L होगा ना. L length is this side. L by 2 is the position of center of mass. So L lambda G into L by 2. Okay. And what is the potential energy of this rope on the right hand side? So mass कितना है इसका? L by 4 length है ना. So L by 4 lambda into G into H क्या होगा? L by 8. So this is the potential energy. अब आप इसको add कर लो. So I mean what you can take common? एक काम करो, lambda L स्क्वायर G को आप कॉमन ले लो, माइनस को भी कॉमन ले लो. सो 1/4 प्लस 1/2 प्लस दिस इज हाउ मच? 1/32. ठीक है, सो इट इज दिस मच. दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट विल बी द फाइनल? चलो यहाँ पे मैं तुम्हें फाइनल निकालती हूँ. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेयर? So finally, there is L by 2 length this side. So it will have its center of mass at a distance of how much? L by 4. And this has a 3L by 4 length of rope hanging down. So its center of mass location will be where? I mean 3L by 8, right? So this will be the location and B is at how much height below? It is L by 2 height below. So final potential energy, चलो B के लिए लिखते हैं. B का मास क्या है? अभी भी सब कुछ डाउन है, सो नेगेटिव ही होगा. माइनस लैम्डा L by 4, राइट? So minus lambda L by 4 G mg into H. H is L by 2. Okay, minus rope का लिखो आप. rope का मास क्या है? L by 2 length is there. So L by 2 lambda G into center of mass location लिख लो L by 4 minus this side में आ जाओ. mass is how much? 3L by 4 lambda into G and then height is how much? Into 3L by 8. So final potential energy can be written as, I mean take minus lambda L square G as common. Then you will be left with what? This is 1 by 8 plus 1 by 8 plus 9 by 32, right? And again, one more step, let us go. So this will become 1 by 8 plus 1 by 8, 2 by 8, that is 1 by 4 plus 9 by 32.
ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन, वी नीड टू डू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या है? दिस इज माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी। सो माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी 1/4 प्लस 9/32 एंड दिस माइनस दिस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लैम्डा एल स्क्वायर जी 1/4, 1/4 प्लस 1/4, सॉरी 1/4 प्लस 2/4, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 we can write. Done it? So let us do it 3/4 and plus how much? Plus 1/32. Okay. Now let us subtract it. So 3/4 minus 1/4 क्या हो जाएगा? 2/4 and 1/32 minus 9/32 minus 8/32. ठीक है, this into lambda L square G. So if you solve it, this will become this, and 2/4 minus 1/4, 1/4. So answer will be equal to how much? Lambda L square G by 4. This much unit of an work person or agent needs to do in order to take B for sure till this point. ठीक है, आपको मतलब बी का वर्क डन वहां तक नहीं निकालना है जब तक ये यहाँ तक ना पहुंच जाए। जब दोनों साइड का मास इक्वल हो जाएगा, उसके बाद आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। नेचुरली ए विल गो डाउन, बी विल गो अप। सो मिनिमम दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क यू नीड टू डू। ओके, I hope it is clear, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.